आज भाई स्टार्ट करो, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर लो। With which type of wave can Doppler shift be observed? अच्छा, डॉपलर शिफ्ट। अच्छा, ये भी याद रखना दैट डॉपलर इफेक्ट वाला टॉपिक जो है वो 2016 में ऐड हुआ है, उससे पहले नहीं था डॉपलर इफेक्ट। ओके, तो उससे पहले क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। एंड पहले जो है ना, उन्होंने शायद लाइट और साउंड दोनों को रिलेट किया हुआ था। एंड लेटर ऑन फिर उन्होंने सिर्फ साउंड को यूज़ किया है, या साउंड उन्होंने रखा है डॉपलर इफेक्ट के अंदर। सही है। और बाकी चीज़ें छोड़ दी हैं। सही है। अच्छा जी, ये हो गया। तो ओके फाइन। तो डॉपलर्स इफेक्ट जो है लाइट के साथ भी पॉसिबल है और साउंड के साथ भी पॉसिबल है। ओके, सो जितनी भी टाइप की वेव है उनके साथ डॉपलर्स इफेक्ट पॉसिबल है। सही हो गया। तो चलो आगे आ जाओ। ये करने की ज़रूरत है स्पीड। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, स्पीड ऑफ द अर्थ है। चलो, इस तरह क्वेश्चन वैसे आता नहीं है, लेकिन इसके फिर ये वाला कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं। आ जाओ जरा ट्राई कर लो प्लीज़। A source of sound frequency 1000 Hz moves away from a stationary observer at a speed of 30 meters per second. The फाइन। speed of sound is 330 meters per second. What is the frequency of the sound heard by the observer? सबसे पहले तो इन्होंने बताया हुआ है कि इट्स मूविंग अवे, सो द फार्मूला दैट यू यूज इज एफ नॉट इज इक्वल्स टू वी ओवर, नीचे क्या आएगा, प्लस या माइनस? Minus. प्लस वे उल्टा होता है। इफ यू आर गोइंग अवे सो इट शुड ऑलवेज बी प्लस। ओके, लेकिन आपको लगता है कि माइनस होना चाहिए, माइनस इंटू प्लस होता है। ओके, और अगर टूवर्ड आ रहे हो तो फिर Okay. प्लस होता है। सो Okay. टूवर्ड आते हैं तो माइनस होता है। ओके सॉरी। अच्छा जी, आ जाओ रख लेते हैं। सो सॉल्व करते हैं। द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द एफ नॉट हमें निकालना है। सही है। सो 330 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 330 इंटू 1000, कर लो कितना आ रहा है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। 916.6. फाइन। 917. 917। ओके, चले आगे चलिए। दस वन। When a car traveling with constant velocity passes a stationary observer, the observer hears a change in frequency of the sound emitted by the car, ओके, which sir B. बी। सो अच्छा, पासिस द ऑब्जर्वर। ओके, तो उससे आपने आपने कहा कि भाई अप्रोचेस वाला केस है। ग्रेटर द स्पीड ऑफ द कार, ग्रेटर द चेंज इन द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। चलो ओके। The change of frequency is always greater as the car move away than as it approaches। इसमें उल्टा होता है, अगर वो अवे जाएगा Sir, I can't तो hear you. वो उल्टा होगा। यार बेसिकली नेट का मसला चल रहा है। सही है। और अब पता नहीं ये नेट का मसला वर्ल्ड वाइड है, वर्ल्ड वाइड नहीं, कंट्री वाइड है। तो भी अभी इसमें जो है ना एक क्लास ऐसी थोड़ी बहुत चलेगी। सही है। कभी डिस्कनेक्ट होगा या कभी जो है ना वो आवाज़ नहीं आएगी, तो मुझे बस लेट मी जस्ट डिस्कनेक्ट माई मोबाइल फ़ोन। ओके, सो आई होप सो अभी सही है। Yes, sir, now it's fine. ओके, सो जब आपके पास जो है आपके पास जो पहले वाला ऑप्शन में जब वो टूवर्ड आएगा तो फिर ऐसा होगा। सही है। और अवे में जाएगा तो हमेशा स्मॉलर होगा, ग्रेटर नहीं होगा, लोअर होगा। और सी के अंदर द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी इज लोअर एज द कार मूव टूवर्ड, इसमें उल्टा दिया हुआ है। सही है, एक का उल्टा दिया हुआ है। द वॉल्यूम ऑफ द साउंड हर्ड बाय द ऑब्जर्वर डज नॉट चेंज एज इट एट द कार अप्रोचेस। So volume is not basically related with the frequency, okay? Volume is related with the amplitude, and amplitude do change as well, okay? जब वो करीब आएगा तो amplitude बढ़ जाएगा, जब वो दूर जाएगा तो amplitude कम हो जाएगा। ओके, चलो। अच्छा, ये क्वेश्चन हमने उसमें भी किया था। सही है, कि उन्होंने कहा है कि डिफरेंस चेंज, ओवरऑल चेंज निकालने का बोल रहे हैं। यू कैन ट्राई दिस वन। A source of sound wave is traveling as shown. In which situation would the stationary observer detect the largest decrease?
in the observed frequency. Largest decrease. Okay. So we can use the formula F is equals to V over V and Vs or times free F. Okay. F नॉट है यहाँ पे. सही है. सो पहला वाला केस अगर आप देखो, सो इन द फर्स्ट केस द सोर्स इज अप्रोचिंग. सो जब कोई चीज़ अप्रोच करती है, सो वी पुट अ नेगेटिव साइन. सो इफ यू यूज अ नेगेटिव साइन, so negative sign mean you have the smaller denominator, and if you divide anything with a smaller denominator you will get the greatest answer. Okay, so this will give you the largest result. Okay, larger result. Okay, and option B के अंदर अगर आप जाओगे, so you have the velocity greater than the previous case, so you will going to experience the largest overall increase, not decrease. Okay, so in this case largest increase will be there. Okay, increase. Okay, are you getting now कि मैं क्यों ग्रेडियंट के डिनोमिनेटर के कॉन्सेप्ट से रिलेट कर रहा हूँ उसको. Yes, sir, but can we not use common sense and use option D as correct? Why, how, what is your common sense? Sir, because when it's moving away, frequency is decreasing. So if Hmm. this it has the highest speed moving away, so it's going to have greater Fine, uh, fine. change in Greater frequency. frequency. Yes, yes, it's very good. You can also use that. Like we know the basic sense of the Doppler effect that if something move away, so the observed frequency will always going to be smaller than the actual frequency. Okay, and if something is moving away with a greater speed, so the decrease in the frequency will also be larger. Okay, fine. Chalo. So very good common sense. The change in the frequency और बता. Okay, this is also the same question. Okay, ये वाला कर लो. उसको छोड़ो, ये वाला कर दो. An ambulance travels along a straight road at speed of 30 meters per second. Its siren emits a sound of frequency 2000 hertz. The sound, the speed of sound in the air is 340 meters per second. The ambulance passes a man standing at the side of a road. What is the frequency of the sound heard by the man as the ambulance moves towards him and as the ambulance Hmm. moves away from Fine. यार him? मसला इसको ऐसा आ रहा है. चलो. सो 2000 फ्रीक्वेंसी तो एक्चुअल है, सही है. सो अगर तो टू वर्ड आएगा तो 2000 से ज़्यादा होना चाहिए, अवे में 2000 से कम होना चाहिए. ओके. सो ना हमने कहा कि भाई जब वो अवे जाएगा तो उसकी स्पीड इसकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कम होगी, टूवर्ड आएगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी. जो सी एंड डी आर द टू पॉसिबल ऑप्शंस. ओके, बट देयर इज अ स्लाइट चेंज, सो एक्चुअली दे वांट अस टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यूज. ओके, नाउ so v which is 340 divided by, so when it is moving toward, so 340 minus 40 minus 30. Okay, into 2000. Okay, so this is the case when it's moving toward, and for the case where where the object is moving away, just put a plus sign. Okay, and निकाल लो कितना बनता है, वो सी या डी में से आपको कंफर्म हो जाएगा क्या आ रहा है. Am I audible to you by the way? Yes, yes, and now I can hear you. Okay, 2193. 93. Fine, so that's the D. Okay, clear. Yes, sir. That's easy. Okay, try this one. A binary star consists of two stars rotating around a common center. Light from one of the stars is observed on Earth. The observed frequency of the light varies between minimum frequency and maximum frequency as shown. The rate of rotation of the binary star increases. What is the change to maximum frequency
and the change of minimum frequency. Hmm. Acha. So they're saying the rate of the rotation of binary stars increases. Okay. So what does that mean? Yes. So the speed is increasing. Okay, fine. Yani the speed of moving toward the observer and moving away from the observer both are increases, right? Because it is moving in the circular path. Okay. So when when a star is when the star will be in this location and it is moving toward the observer eye, right, in the circular path, so वो अप्रोचिंग वाला केस होगा, और वो जब यहाँ पे पहुंचेगा सो वो अवे वाला केस होगा, राइट? So the observed frequency, the maximum observed frequency will going to be higher than the actual one, and the minimum frequency going to be lower than the actual one because the rate of rotation has increased. Okay. So so C, okay. So this will be higher value and this will also be a higher or actually the lower value, आप इसको ऐसे कह सकते हो, right? Not up, बल्कि वो down आ जाएगा, मतलब ये ग्राफ आपके वैसे ऐसे बनेगा. ओके, क्लियर हो गया? Yes, sir. चलो ये कर लो. A jet aircraft travels at a speed of 0.8 v, where v is the speed of sound. The aircraft approaches a stationary observer. The frequency is the frequency of sound emitted by the aircraft is 100 hertz. Which frequency does the observer hear? Hmm. V is 330. Hmm. Okay, you don't need to 330. you don't need to you don't need to remember or memorize the value. Okay, अगर वो v की टर्म में दी हुई है, you can solve it in the form of v like this. So they're saying that the aircraft is approaching. Okay, so v minus v of s times f. Okay, the speed of sound is just v over v negative vs is 0.8 v. Okay, and f is just 100. Okay, so when you simplify the denominator you will get 0.2 v, okay, into 100. Okay, and v goes off, and 0.2 or 100 divided by 0.2 you'll get 500. Yes, Yes, sir. fine. अल्लाह अकबर, आगे वाला कर लो, अगले वाला. A police car has a two-tone siren emitting sound of frequencies of 700 hertz and 1000 hertz. The police car is traveling at a speed of 40 meters per second hour towards a stationary observer. The speed of sound in the air is 340 meters per second. Hmm. What is the difference between the two frequencies of the sound that is heard by the observer? जनाब, सो इन्होंने कहा ट्रैवलिंग टूवर्ड द ऑब्जर्वर. ओके, सो टूवर्ड द ऑब्जर्वर का मतलब है नीचे जो साइन आ जाएगा वो नेगेटिव वाला आ जाएगा. सही है, Minus. वेरी गुड. और जो स्पीड है वो आपके पास है 340. सही है, 340. सही है, एंड वी एस जो आपके पास हो जाएगा वो हो जाएगा 40. राइट नाउ अब फ्रीक्वेंसी पहले आपने 700 के लिए काम करना है, फिर 1000 के लिए काम करना है, राइट? सो यू कैन डायरेक्टली टेक द डिफरेंस ऑफ द टू वैल्यूज. ओके, सो 300. ओके, भी आ जाएगा. 1000 माइनस 700 करोगे वो आ जाएगा, राइट? क्योंकि ये वाली चीज पूरी सेम रहनी है, राइट? इससे चेंज नहीं हो रहा कुछ. तो निकाल दो Yes, कितना आ sir. रहा है. 340. 340. फाइन. ये भी कर लो, अगला वाला भी कर लो. A bat flies directly towards a fixed ultrasound detector at a speed of 25 meters per second, emitting pulses of ultrasound of frequency 40 kilohertz.
What is the sound in the air? The speed of sound in the air is 330 meters per second. Which frequency does the ultrasound detector record? हम्म। अच्छा जी। सो एफ नॉट इज इक्वल्स टू वी ओवर वी, इनका डायरेक्टली टुवर्ड द फिक्स अल्ट्रासाउंड डिटेक्टर, ओके। अच्छा, बाय द वे तुम्हें पता होना चाहिए कि जो बैट्स होते हैं, जो चमगादड़ होते हैं, राइट, दे एक्चुअली यूज देयर अल्ट्रासाउंड एबिलिटी टू फॉर द डायरेक्शन एक्चुअली, ओके। ठीक हो गया। तो वो Yes, sir. एमिट करते हैं अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्ट होकर आती है, तो उनको पता चल जाता है कि सामने जो कोई दीवार है या कोई ऑब्स्टिकल है तो वो कितना दूर है, सही। तो खैर, अब यहाँ पे हमारे पास जो है स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर इज 330। द एक्चुअल स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर इज 342 पॉइंट समथिंग, ओके। बट जो भी इन्होंने दे रखी है उसको आप याद कर लो, एंड -25 इंटू 40K, ओके। सो इट इज, द आंसर इज इन द फॉर्म ऑफ K, सो यस। हाउ मच? Sir, it is 43.3. पॉइंट डी, ओके। डू द अदर वन प्लीज। A buzzer emits a sound of frequency 846 Hz, is attached to a spring and rotated in a horizontal circle. The linear speed of the buzzer is 25 meters per second. The speed of sound is 340 meters per second. What is the maximum frequency heard by the observer? हम्म। ओके। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कब होगा, व्हेन इट इज मूविंग टुवर्ड और अवे? Towards टुवर्ड्स, फाइन। सो 340 ओवर 340 -25, ओके, इंटू 100, इंटू नो 846, 913। 913.1. ओके, अब ये आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, आप ये भी कर लो। A stationary insect on the surface of water creates circular waves with its legs as shown in diagram 1. The insect begins to travel to the right as shown in diagram 2. Which row describes the change to the waves at x caused by the movement of the insect? साइंटिस्ट है ये इंसेक्ट भी। अच्छा, हाँ जी, क्या करोगे? यस, एनी आइडिया? अब इंसेक्ट जो है वो जब खड़ा हुआ है तो Uh, फ्रीक्वेंसी आपको हर जगह सेम लग रही है, राइट। एंड yes. जब वो मूव कर रहा है, सो टुवर्ड एक्स, राइट। जब आपका इंसेक्ट मूव करना शुरू किया तो टुवर्ड एक्स आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई है, राइट, बिकॉज देयर आर मोर नंबर ऑफ वेव और Frequency मोर नंबर ऑफ, increases and the speed will remain same. यस, क्योंकि वेव लेंथ डिक्रीज होती है, ओके, वेरी गुड, सही हो गया। अच्छा, यहाँ भी बच्चे ना बड़े कंफ्यूज होते हैं कि भाई हमें कब पता चलेगा कि कौन सी दो चीज़ें रिलेटेड है, यानी फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ कब रिलेटेड है, फ्रीक्वेंसी और स्पीड कब रिलेटेड है, वेव लेंथ और स्पीड कब रिलेटेड है, और या फ्रीक्वेंसी और स्पीड या ये चीज़ें कब रिलेटेड होती हैं। तो ये बेसिकली आपको सिनेरियो देख के समझ में आती है, ओके। सो अगर तो आपके पास अगर तो लाइक आप कह लो कि भाई एक ऐसा स्पीड ऑफ लाइट ले लो, सही है। अब स्पीड ऑफ लाइट में स्पीड, आप लाइट की स्पीड कांस्टेंट होती है, क्योंकि लाइट की स्पीड आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो वो फॉर एवर कांस्टेंट है। तो उसमें अगर आप वेवलेंथ बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, वेवलेंथ कम करोगे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, राइट। ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब स्पीड ऑफ साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड ने नहीं चेंज होना, ओके, बट वो साउंड की फ्रीक्वेंसी या साउंड की वेवलेंथ एक साथ चेंज होगी, राइट। इसी तरीके से जो है कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है। जैसे अब अगर एक वेव आपने जनरेट कर दी, एक लेट से एक वाटर वेव है, आपने वाटर के अंदर वेव जनरेट कर दी, राइट। सो फॉर एवर उसकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, राइट। अब वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी तो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, राइट। सो इट डिपेंड्स कि आप क्या Yes. कर रहे हो, सही हो गया ना। तो खैर, हम्म,
अच्छा ये कर लो, अब इस तरह के क्वेश्चन में ना सिंपलीफिकेशन में मसला होता है बच्चों को, जरा ये भी देख लो। In one of the first experiments to demonstrate the Doppler effect, a train was filled with trumpeters all playing a note of frequency 440 Hz. The difference in observed frequency of the note as the train directly approached a stationary observer was 22 Hz. The speed of sound was 340 meters per second. At which speed was the train moving? नाउ टूवर्ड ही है। It is towards. ओके, माइनस वी एस एफ इज इक्वल्स टू एफ नॉट। ओके, सो अब हमें पता है 340 ओवर 340 माइनस वी एस इंटू एफ हमारे पास है 440। ओके, एफ नॉट कितना दिया हुआ है बता सकते हो? 22. अबे ऐसा मत बोलो यार ब्रो, उसने कहा हुआ है कि द डिफरेंस इन द ऑब्जर्व Yes, sir, फ्रीक्वेंसी। 418. व्हाई आर यू सब्ट्रैक्टिंग एंड नॉट एडिंग? Sir, difference. नो, बट डिफरेंस एडिशन की फॉर्म भी हो सकता है, लाइक What डिफरेंस is moving एडिशन की। towards? Is it? So if it is moving toward, then the observed frequency should be greater than the actual frequency, right? Sir, it's 462. Yes. समझ Yes. रहे हैं ना भाई? Yes. 462 फाइन। चलो ये हो गया। नाउ अब आ जाओ कर लेते हैं। सो 462 डिवाइडेड बाय, ये चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं आसान रहेगा। मैं इसको 440 को ये रहने दे रहा हूँ, डिवाइड बाय 462, और 340 मल्टीप्लाई किया इसे, और यहाँ पे मैंने भेज दिया 340 माइनस वी एस। ओके, मैंने इसको यहाँ भेज दिया और इसको यहाँ ले आया हूँ, सही है। अच्छा जनाब, Yes, I'm getting 16.2. 16.2 सही है। यहाँ से 340 को आपने सब्जेक्ट बनाया, और -340 इंटू 440 डिवाइडेड बाय 462। फाइन, चलो ये हो गया। अच्छा जनाब, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी शेयरिंग बोर्ड, आसान सा है। और व्हाट इज द स्पीड ऑफ द साउंड इन द एयर, ये कर लो ये कर लो, इसकी सिंप्लीफिकेशन में भी मसला होता है। A loudspeaker emitting a constant frequency of 2000 Hz is swung in a horizontal circle with a speed of 15 meters per second. The stationary observer is level with the loudspeaker and situated a long distance from the loudspeaker. The observer hears a sound of varying frequency. The maximum frequency heard is 2097 Hz. What is the speed of sound in the air? हम्म, ओके। सो अब यहाँ पे आपके पास जो है हम टूवर्ड का फॉर्मूला लगाएं या अवे फ्रॉम द अवे का फॉर्मूला लगाएं? यस, व्हाट डू यू से? Sir, any? ऐसे कैसे है नहीं? Sir, डॉपलर it's इफेक्ट saying हमारे that अब्बू थोड़ी here's लगते थे। this ओके। sound of varying frequency. ओके, अरे मेरा बच्चा, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी देखो और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी देखो। Is the observed frequency greater than the actual frequency or smaller than that? Sir, it's maximum frequency. So what is the maximum frequency? Is it smaller than the actual frequency or greater than that? It is greater, और greater कब होता है? When you are moving away or toward? moving towards. Yes. So this is how you can pick the formula. समझता है कि नहीं समझता है? V over But V sir, maximum frequency could also be that they heard when it in is the moving maximum away? frequency. Yes. No, this is not possible. ब्रो, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब ये नहीं है कि उसको बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ सुनाई दे रही है, ओके? और आप ये सोच रहे हो Okay.
मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है द डिफरेंस, द मैक्सिमम चेंज इन द फ्रीक्वेंसी, ओके. So, if it is moving toward the observer, then the maximum frequency that he can ever hear is this 2097. Okay, इससे ज़्यादा नहीं जा सकती. But since it is moving toward, that is why ये ज़्यादा आ रही है 2000 से. Okay, लेकिन अगर वो away जा रहा होता, so the maximum frequency will always be smaller than the 2000 hertz. Okay, क्योंकि वो away के लिए Okay. हमेशा हमेशा उससे छोटी होगी, right? Fine. Yes. चलो, ये हो गया. अच्छा, अब आप कर लो भाई. सो 2097 डिवाइडेड बाय, मैं एफ को यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ. सो 2000 इज इक्वल्स टू वी ओवर वी माइनस 2015. ओके, सही है जनाब. अब ये चीज़ है, अब आपको यहाँ पे कॉमन वॉमन लेना पड़ेगा. सही, पहले तो इसकी वैल्यू बताओ, कैलकुलेट करिए क्या वैल्यू आ रही है. 1 पॉइंट समथिंग आएगी. 2097 डिवाइड बाय 2000. 1.0135. 1.0135. फाइन. मैं उससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ ये वाले ब्रैकेट को. इज इक्वल्स टू वी. सही है. जब हम एक्सपेंड करेंगे, सो 1.01 मैं ये ले लेता हूँ वी, और माइनस 115 इंटू 1.01, और बकाफी है. सही, इज इक्वल्स टू वी. वी को उधर ले आओ. सो 1.01 वी माइनस वी इज इक्वल्स टू 15 टाइम्स 1.01. ओके. एंड जब तुम इसको डिवाइड करोगे, जब इसको आप माइनस करोगे, you'll get 0.01. ओके. एंड 15 इंटू 1.01 डिवाइडेड बाय 0.01. ओके. एंड दिस इज इक्वल टू, जरा निकाल दो कितना आ रहा है. 15. 15 कैसे आ सकते हैं अभी, उसी से डिवाइड करा दियो भाई तुम. Yeah, अब no, 1.01 से थोड़ी डिवाइड करना है, 0.01 से करना है. sir, 1515. अबे इतना भी नहीं आना चाहिए भाई. सही सही कर रहे हो. 1.0135 माइनस 1. आ तो मेरे पास भी यही रहा है. स्पीड ऑफ द साउंड इन द एयर, लेकिन ऐसा तो कोई आंसर नहीं है. 2097 डिवाइडेड बाय 2000, 1.0485 आ रहा है. ओके. सो इफ आई यूज 15 इंटू आंसर डिवाइडेड बाय Sir, आंसर can you माइनस repeat that? 1, 324 आ रहा है. क्या चीज़? Sir, what did you just say? I couldn't hear. ब्रो, actually you miscalculate this thing. Okay, this is not 1.0135, this is actually 1.0485. Okay, I 1.0485. calculate which one? This one. Okay, 2097 divided by 2000 is something else, right? So वो आपका गलत आ रहा था. सही है. Sir, 2027. अबे 97 है बे. मेरा 9 इतना अच्छा बना हुआ है यार, इतनी बेइज्जती करने की बात नहीं है. ओके, सही है ना. Sir, it is 1.085. ओके फाइन, 85. और यहाँ पे भी आप करेक्ट कर लो, 1.085, 1.085. ओके. एंड 0.085. फाइन. सो यहाँ के पास आंसर आ जाएगा. चलो भाई, हो गया. आगे चलने, एक दो क्वेश्चन और कर लें, बस है काफ़ी, क्या बोलते हो? Sir, हम्म. it's still getting अबे 191.5. कैसे यार. 15 इंटू 1.0 485. ओके, डिवाइडेड बाय 1.0485 माइनस 1. आई एम गेटिंग 324 यार. दिस इज, एक मिनट, 485. लेट मी
485 एंड 485, ये गलती हो गई मुझसे। ओके। Sir, थ्री 324.4. ट्वेंटी फोर यस 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 यस। सही है ना, क्लियर हो गया। Yes. चलो चले बस करें, क्या बोलते हैं, आगे चले। Okay, और sir. क्वेश्चन, ये कर लो ये कर लो। A source emitting sound of a single frequency travels at a constant speed directly towards an observer. The source then passes the observer and continues to move directly away from the observer. The velocity of the source remains constant, which graph represents the variation in time of the frequency f naught and the sound heard by the observer. जनाब, व्हाट इज पॉसिबल ऑप्शन एंड व्हाई? एनी आइडिया, एनी आइडिया? कुछ आ रहा है दिमाग में, कुछ खुराफात आ रहा है? No, sir. नहीं। अच्छा देखो, सबसे पहली चीज़ तो उन्होंने ये कहा है कि इट इज़ कांस्टेंट स्पीड डायरेक्टली टूवर्ड द ऑब्जर्वर। डायरेक्टली टूवर्ड, सो व्हेन समथिंग मूव टूवर्ड द ऑब्जर्वर तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ग्रेटर होती है Frequency स्मॉलर। increase तो increasing. इसका मतलब है कि इनिशियली द फ्रीक्वेंसी शुड बी लार्जर, ओके। इट शुड बी लार्जर, और इट शुड बी लार्जर, ओके। सो ए एंड सी आर नॉट द पॉसिबल केसेस, ओके, इज दैट क्लियर? Yes, sir. Fine. Now, they are also saying that the velocity of the source remain constant, okay? So if you are moving with a constant speed, then the change in frequency will also be constant, okay? Or and if you are moving with the acceleration, with a constant acceleration or with an increasing speed, so your change will also be increasing or decreasing, okay? Is that clear? Yes, sir. Fine. So since our object is moving with a constant speed, so the increase or decrease will also be constant. Okay. So over here, this is an increase, but this is a constant increase, and this is a decrease, and this is a constant decrease. Okay. Clear? Hua? Yes, sir. Fine. Now. The source now away from the observer, तो वो हो जाएगा आपके लिए। ओके, ये कर लो, ये थोड़ा मुश्किल अजीब से, मुश्किल तो नहीं है, खैर अजीब से। The horn of a train emits a sound of frequency f1. While the horn is sounding, the train moves directly towards a stationary person. The speed of the train is 0.2 v, where v is the speed of sound. The frequency of the sound heard by the person is f2. What is the ratio f1 over f2? जनाब, अच्छा, F1 is basically the actual frequency, okay, and F2 is a moving frequency or observed frequency. So we can say that So it F2, can't be b or d. it can be B or D. अच्छा, चलो, अब मेरा दिमाग क्यों नहीं चल रहा इतना। The speed of the train, the speed of the sound, the speed of the sound, and since it is moving directly towards, so you have to subtract and F. So this is F2 and this is F1. So F2 over F1 will going to be V over V minus zero point 0.2 V gives you zero point 0.8 V, 0.8 V, V and V goes off 1 over 8. I'm getting D, how? Okay, wait. The horn of the frequency emits the sound just So while the it's horn f1 is over f2, not okay, f2 over okay, f1. okay, okay. F1 over F2 is going to be 0.81. फाइन, चलो ये भी हो गया। अच्छा जी, अगेन आपको जो है स्टडी स्पीड है, फाइन, ये हो जाएगा आपसे। स्पीड ऑफ द ट्रेन, इसका भी एक आधा क्वेश्चन मैंने कर लिया है। सही है। आई थिंक द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर इजी, आई थिंक दे आर डूएबल, नाउ दे आर डूएबल। सो मेरे ख्याल से बस करते हैं, सही है। अब आप खुद ही इसको अटेम्प्ट करो, Okay, sir. Okay. और फिर इसको देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम इंशाल्लाह आगे चलेंगे। सही है। चले, चले जी, ओके, टेक केयर Okay, sir. ब्रो, अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz. हाफिज़।